जय जगन्नाथ सांग माने वेलकम टू आवर चैनल। आज पढ़िबा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग एंड स्प्रिंगबूट। स्प्रिंग थाउ थाउ स्प्रिंगबूट कौन पई आसिला, स्प्रिंगबूट रो एडवांटेज कौन, डिसएडवांटेज कौन। फर्स्ट देखिबा व्हाट इज स्प्रिंग। स्प्रिंग इज एन एप्लिकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। स्प्रिंग यूज करिकी आमे माने डेवलप करि परिबा डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लिकेशंस लाइक स्टैंड अलोन एप्लिकेशंस, वेब एप्लिकेशंस, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लिकेशंस। What is standalone application? The applications which are specific to only one machine are called as standalone applications. माने जो application की specific machine रे कामो करुथुबो ताकू कहिबा standalone applications. For example, Eclipse, SQL Developer, Notepad, Calculator, etc. Then, what is web application? The application which we can access from browser are called as web applications. माने जो एप्लिकेशन को आमे ब्राउजर द्वारा एक्सेस करूछु ताकू कहिबा वेब एप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल फेसबुक, जीमेल, IRCTC, etc. Then, what is distributed application? If one application is communicating with another application, then they are called as distributed applications. माने जदि गोटे एप्लिकेशन आउ गोटे एप्लिकेशन को कम्युनिकेट करे, then that is called distributed applications. Distributed applications are used for B2B communication, business to business. For example, पासपोर्ट अप्लाई करिबा बेलकू आमकू आधार नंबर मागी थाए काहेकि ना से चेक करे कि एप्लिकेंट इंडियन सिटीजन की नाही यूजिंग आधार नंबर। मीन्स पासपोर्ट एप्लिकेशन कम्युनिकेट करूची आधार एप्लिकेशन को। Similarly, Make My Trip communicates airlines. Spring framework developed in modular fashion. Several modules are available in Spring framework like springcore, springdata, springwebmvc, spring security, spring batch, spring AOP, spring rest, microservice. Spring provided IOC and DI to achieve loosely coupling in application development. IOC stands for inversion of control. DI stands for dependency injection. IOC माने it is a principle which is used to manage and collaborate dependencies among the objects in our application. DI माने the process of injecting dependent bean into target bean. Don't worry guys, आमे माने in details रे पढ़िबा IOC कौन आउ dependency injection कौन separate class रे काहेकि ना very important concept एटा। Spring is a versatile framework. Versatile means Spring framework integrates with other framework like struts. Then, what is Spring Boot? Spring Boot is an approach to develop Spring-based applications with minimal or less configurations. Spring Boot internally use करुची Spring ही, जोटा Spring रे use करुचु ताहा ही use करिबा Spring Boot रे, but less configuration required in Spring Boot रे, because Spring Boot automatically take configuration. केमिथि नौची, कौन configuration नौची, future class रे देखिबा। Spring Boot is not replacement for Spring framework. Spring Boot is part of Spring framework only, but it reduces configurations required in application development. All Spring framework modules we can use with Spring Boot also. What type of applications we can develop using Spring framework? Same type of applications can be developed using Spring Boot with minimal configurations. Features of Spring Boot: minimal or less Spring-based configuration. Starter POMs to simply build configuration. Embedded servers to run web apps. Note, we can deploy Spring Boot application to external servers also. Production-ready features like health check, metrics, heap dump, thread dump, and config props provided with actuators. Auto configuration. It will guess configuration required to run our application and will do that configuration as per our app requirement. No XML configurations required. ए सबु एडवांटेज फ्यूचर क्लास रे प्रैक्टिकल सह एक्सप्लेन करिबी। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्प्रिंग बूट: स्प्रिंग बूट इज बेस्ट सुटेबल फॉर स्क्रैच डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। माने स्टार्टिंग रु स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट एप्लिकेशन करिबा इजी, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस टू कन्वर्ट एक्जिस्टिंग स्प्रिंग फ्रेमवर्क बेस्ड प्रोजेक्ट्स इनटू स्प्रिंग बूट एप्लिकेशंस। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्लास रे देखिबा हाउ मेनी वे वी कैन क्रिएट स्प्रिंग बूट एप्लिकेशन। जय जगन्नाथ।